Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हाजिर हैं हम हमेशा की तरह देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, अर्थनीति और शेयर बाजार से जुड़ी हुई ताजा खबरों को लेकर। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए फोन लाइन पर आमंत्रित हैं जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया, धन्यवाद। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Prime Minister Narendra Modi says India is playing a leading role in global revival, endorses contribution of Indian talent in revival of COVID-19 hit global economy. Key domestic stocks rise more than 1%, resuming rally after a day's breather. Sensex closes at 36,738, Nifty settles at 10,813. Global equity indices log gains in hope of upcoming company earnings, and gold crosses rupees 50,000 mark per 10 grams in Delhi's bullion market. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अर्थव्यवस्था की पुनर्बहाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है भारत। कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रतिभाओं के योगदान को रेखांकित किया। घरेलू शेयर बाजार में लिवाली तेज, प्रमुख सूचकांक 1% से अधिक बढ़त के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 36,738 पर पहुंचा, निफ्टी 10,813 दर्ज हुआ। कंपनियों की आय बेहतर होने की उम्मीद में दुनिया भर के शेयर बाजार में उछाल और दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का मूल्य 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ऊपर पहुंचा। Prime Minister Narendra Modi said that India is performing, reforming, transforming and offering new economic opportunities. He said this is an India which is adopting a human-centric and inclusive approach for the development. In his inaugural address today at the India Global Week 2020, Mr. Modi said India is playing a leading role in the global revival and the country is ready to do whatever it takes to further global good and prosperity. He said it is natural to link global revival and India, and two factors are contributing immensely in this revival. One is Indian talent and the other is India's ability to reform and rejuvenate. He said India is a powerhouse of talent that is eager to contribute, and Indians are natural reformers who have overcome social or economic challenges. He said revival with care, revival with compassion, and revival which is sustainable, both for the environment and the economy, is the objective of India. On the COVID-19 pandemic, Mr. Modi said, India is fighting a strong battle against the global pandemic with an increased focus on people's health, and the country is equally focused on the health of the economy. Listing out the major milestones of the present government, the Prime Minister said, during the last 6 years, India has made great gains in the areas of financial inclusion, housing and infrastructure construction, ease of doing business and bold tax reforms, including the GST. He said, due to the technology, every penny has reached the beneficiaries directly. The Prime Minister invited global companies to invest in India. He said, India is one of the most open economies in the world, and it invites global companies to come and establish their presence in India. He assured that very few countries will offer
this kind of opportunity that India provides today. He said there are many possibilities and opportunities in India in sectors like agriculture, MSME, defense, space and pharma. He said Atmanirbhar Bharat is not about being self-contained or being close to the world, but it is about being self-sustaining and self-generating. In his concluding remarks, Mr. Modi said, this forum is also marking the 100th birth anniversary of Pandit Ravi Shankar, who took the beauty of Indian classical music to the world. India Global Week is a 3-day virtual conference based on the theme, Be the Revival, India and a Better New World. During the India Global Week 2020, 5,000 global participants from 30 nations will be addressed by 250 global speakers across 75 sessions. This forum brought together global thought leaders and captains of the industry who will focus and discuss aspects relating to opportunities in India as well as the global economic revival post-COVID. डॉक्टर शर्मा, सबसे पहले हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण जो कह लें कि ये मीट आयोजित हुआ है, इंडिया ग्लोबल वीक, 3 दिन का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है, इससे किस तरह की संभावनाएं बन रही हैं भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पूरे दुनिया में भारत प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है, यहाँ के सुधार लोगों को नजर आ रहे हैं और हम नई आर्थिक चुनौतियों के लिए अवसर उत्पन्न कर रहे हैं। देखिए, भारत का हमेशा एक लीडिंग रोल रहा है और भारत ने वो सिद्ध भी किया है और IMF ने अभी कुछ ही वर्ष पहले बोला था कि भारत एक ब्राइट स्पॉट है ग्लोबल इकोसिस्टम में। तो हमारे प्रधानमंत्री जी उसी चीज को जिस तरीके से वो प्रेजेंट कर रहे हैं कि भारत में अपॉर्चुनिटीज हैं, भारत एक पॉसिबिलिटीज का देश है, भारत अपॉर्चुनिटीज का देश है, वो बात बिल्कुल सही है क्योंकि हमारे पास इतने ज्यादा संसाधन हैं, इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं कि हम अपने आप ही बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में भारत एक लीडिंग रोल प्ले करेगा कि ग्रोथ, एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर बनेगा। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जैसे लेमन क्राइसिस के टाइम पे भारत का जो योगदान था, जो भारत का कंट्रीब्यूशन था ग्लोबल जीडीपी में, वो लगभग कोई 1.7 था, जो बढ़ के पिछले 10 साल में ही डबल के बराबर हो चुका है। 3% से ज्यादा अभी हम जो ग्लोबल जीडीपी है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमने सिद्ध किया है, हमारी जो नंबर्स है, हमारी जो ग्रोथ है वो पूरे तरीके से प्रमाणित है कि हम अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि कोविड के टाइम में ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट जरूर हुआ है और हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ क्वार्टर्स में ये ग्रोथ इम्पैक्टेड रहे, जो फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स रहेंगे वो इम्पैक्टेड रहेंगे। लेकिन ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है वो हमारा वापस रिबाउंड करेगा और हम एक वर्ल्ड का जो ग्लोबल ग्रोथ ड्राइवर हम बन के सिद्ध करेंगे कि हम किस तरीके से जो ग्लोबल ग्रोथ है उसको हम पुश कर रहे हैं। जो भारत का कंट्रीब्यूशन है उसमें बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि भारत के लिए इस टाइम पे जो अपॉर्चुनिटीज हैं, खासकर जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स भारत की तरफ देख रहे हैं, जो वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो भारत में अपनी जो कंजम्पशन डिमांड है वो बहुत इंटैक्ट है। भले ही कोविड की वजह से कुछ समय उसके ऊपर इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन वापस हम देख रहे हैं कि डिमांड जो है बहुत अच्छे से रिबाउंड कर रही है और आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में ये विजिबिलिटी और बढ़ेगी, जो डिमांड है वो और ज्यादा विजिबल होगी और जो ग्रोथ है वो वापस अपनी पटरी पे बहुत जल्द ही दौड़ाएगी। Dr. Sharma, the Prime Minister has talked about the green shoots that are showing up, and the biggest strength at this point of time could be that we have the US dollar $500 billion in forex reserves, which have been accumulated by the RBI over some months. And I think it is because of this, Kitty, that the country is not being bracketed with other emerging economies by the markets at present. What do you have to say about it? Yes, because recently the numbers, like the stock markets are booming and we have a good number of foreign exchange reserves. And there are also green shoots in the various areas like electricity consumption and financial segments. Financial transactions are increasing, and other segments like manufacturing, consumer goods sales is also picking up. In the month of June, consumer goods sales
is at pre-COVID levels. So a lot of green shoots in the consumer segment, consumer durable segment, and electricity consumption and the increased financial transactions are indicating that we will rebound sooner than later. So that is a good thing that green shoots are coming, and now our growth will also start picking up in the coming quarters. Though first quarter and second quarter will be impacted because of the slowdown in various sectors of the economy. But these green shoots are indicating that growth is very much on the cards in the coming quarters. What do you have to say about the rural sector, which is relatively bright spot again because of better monsoons, which will deliver a normal harvest for the summer crop, and also the lesser instances of COVID-19 infections over there? Yes. Even the agriculture and forestry and fishing sector is about to clock 3.5% growth. Isn't that also another area that we need to look forward and harp upon and nurture in the coming days? Yes, very good question. As India is a major growth driver of the global economy, and India is an emerging economy. And within India, I would say that rural sector is also an emerging sector which is driving the growth trajectory. So going forward, I believe rural sector will be more and more visible in the coming times to drive the India's growth story. And there are a lot of reforms for the rural segment, lot of reforms during the recent times by the Honorable Finance Minister, like enhanced allocations for the Manrega, and a lot of reforms for the agriculture infrastructure, and a lot of facilitation to the farmers. So all these reforms are indicating that rural sector will emerge as a major growth engine for the Indian economy, as India is a major growth engine for the world economy. So our strength is within India. Our rural sector, our agriculture sector will be major growth driver to push the growth trajectory to the higher level. डॉक्टर शर्मा, प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि कृषि, एमएसएमई, रक्षा, स्पेस और फार्मा सेक्टर अवसरों की दृष्टि से काफी आकर्षक हैं भारत के, और बहुत संभावनाएं यहां बनती हैं। आप इनमें से किन क्षेत्र में देख रहे हैं संभावना, और ये जो हमारा सम्मेलन हो रहा है 3 दिवसीय वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उसमें किस तरह के अवसर इन क्षेत्रों में दिख सकते हैं? We have a lot of opportunities in each and every sector, but yes, there are few bright sectors like pharmaceutical is very, very intact, and we have very competitive advantage in the many economies, and our exports are also very good in those economies. And going forward, there are a lot of expectations that this sector will become a major growth driver in the export segment. And defense manufacturing, we have a lot of opportunities in the defense manufacturing because we have very good and vast defense sector, and a lot of demand of products is there. And our companies are, majorly our MSME sector is also very keen to enter in the defense manufacturing, and they are already, a lot of companies are already there. So I believe at this juncture, this will be a major attraction point that we have production capacities, and we have to enhance our production possibilities. Like we are importing lots from China, so now we have to stop the unwanted imports, and we should shift the imports from the other economies also. So at this juncture, with the domestic capacity building, I believe opportunities will be more and more for the manufacturers, not only for the Indian manufacturers, but for the global manufacturers. They can invest and come in India because now India is a country of reforms. We have a lot of reforms, plethora of reforms happened during the last 1 year, and particularly during the last 2-3 months, there are tremendous reforms in the economic segment and the financial segment. So I think at this juncture, India becomes a major opportunity for the global investors. Now they will come and invest in India and start making in India, and they can also export from India. Okay, that seems quite natural because the Prime Minister has also said that India remains one of the most open economies in the world, and he's also talked that it is natural to talk about revival, and there is faith
that the story of global revival will have India playing a leading role. So therefore what you are saying adds up to what the Prime Minister is also talking about, that it's an open invitation for the world to come and make in India. Yes, because India is a resilient economy. Because, at the time of Lehman crisis, we proved that, and we rebounded sharply after the Lehman crisis with the lesser amount of the fiscal stimulus. And we provided only 3% of the GDP as fiscal stimulus. Other economies provided more than 10%. And we were able to rebound very significantly in the next very few quarters after the Lehman crisis. So the same thing is happening now in the COVID time also. Demand has started picking up, and slowly in the coming quarters, I believe the growth trajectory will be at the pre-COVID level. डॉक्टर शर्मा, किन क्षेत्रों में आप देख रहे हैं कि जो निवेशक हैं उनका ध्यान आकृष्ट होगा भारतीय बाजार में? देखिए, भारत के बाजार में वैसे तो सभी क्षेत्र ही आकर्षित हैं, लेकिन अगर मैं उनमें से कुछ चुनिंदा सेक्टर्स को चुनता हूं तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ग्रोथ आएगी, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने बहुत अच्छे एलोकेशंस किए हैं, बहुत सारी रिफॉर्म्स हुई हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुई है। और इसके अलावा आईटी सेक्टर हमारा बहुत अच्छा है। हमारा आईटी सेक्टर ने पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त की है, और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। मेरे ख्याल से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बन सकता है। तो इसके अलावा जो फूड प्रोसेसिंग में हमारे पास ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटीज हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि हम एक अग्रेरियन इकोनॉमी है, लेकिन हमारा जो ग्लोबल प्रेजेंस है वो बहुत कम है। हम 30-35 बिलियन डॉलर ही एक्सपोर्ट कर पाते हैं, जबकि जो ग्लोबल डिमांड है वो 1300 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। तो हमारे पास अथाह अपॉर्चुनिटीज है कि हम इसको 30-35 बिलियन डॉलर को इंक्रीज करके 100, 150, 200, 250 बिलियन डॉलर तक लेके चले जाएं, जिससे कि बहुत ज्यादा रोजगार भी पैदा होगा, और जो हमारा रूरल एंटरप्राइजेस है, जो रूरल क्षेत्र है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें बहुत खुशहाली आएगी। तो ये इस सेक्टर को मैं बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग सेक्टर समझता हूँ। मैं इसको आईटी सेक्टर के मुकाबले में तुलना करता हूँ कि हमारा जो नेक्स्ट ग्रोथ ड्राइवर जो रूरल इकोनॉमी के लिए रहेगा, दैट विल बी द फूड एंड द एग्री एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, चलें शेयर बाजार की ओर। पहले घरेलू शेयर बाजार। एक दिन की नरमी के बाद घरेलू शेयर बाजार में आज फिर लिवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक 1% से अधिक बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 409 अंक यानी 1.12% बढ़कर 36,738 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 108 अंक यानी 1.01% बढ़कर 10,813 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजारों की ओर चलें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.07% की मामूली वृद्धि हुई, वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग आधी फीसदी यानी 0.49% बढ़कर बंद हुआ। Resuming its upward movement after a day's breather, equity benchmarks today rallied more than 1%, tracking gains in index heavyweights, HDFC Twins and Reliance Industries amid positive cues from overseas markets. After touching a peak of 36,806 during the day, the 30-share index Sensex settled 409 points or 1.12% higher at 36,738. The NSE Nifty jumped 108 points or 1.01% to finish at 10,813. Broader indices at BSE underperformed the Sensex as the mid-cap closed almost flat, adding marginally 0.07%, and the small cap rose 0.49%. Bajaj Finance was the top gainer in the Sensex pack, spurting around 4%, followed by SBI, Tata Steel, HDFC, Bajaj Finserv, HCL Tech and M&M. On the other hand, ONGC, Tech Mahindra, TCS, HUL and Maruti were among the laggards. Experts said Indian markets opened on a positive note following upbeat Asian cues as positive economic data from China added to the momentum. During afternoon session, the benchmark scaled crucial levels as sentiments remained firm. Dr. Sharma, this was a good day for metal indices and also that of finance.
Metal went up by 2.13% and finance by 1.59%. Do you think this momentum, though your insistence is more towards the food industry, but what do you think of these two indices doing well? Yes, because as growth is expected to pick up in the coming quarters and there are green shoots, at this juncture, I believe demand for infrastructure will also rise. So the metal and the other infrastructure stocks will also go up in the coming times because there are a lot of reforms and lot of allocations for this sector. So going forward, I believe the commodity prices like the metals and other related commodities will the prices of these commodities will remain intact, and because demand will gradually pick up from here, and in the coming months, like in the months of August, September, October, there is a lot of demand from the festive demand also every year. So in collaboration with that particular demand, I believe the prices of these commodities will remain intact, and that will be the scenario in the share prices also. Okay, there are company earnings coming up and everyone is looking forward to it. You think the June quarter corporate earnings will provide a better picture of the damage caused by the pandemic-induced breakdown? Yes, I believe the results will be better as anticipated earlier. So, because like Unlock 1 has proved a good scenario in the Unlock 1 because this is more than expectations, and green shoots are coming sharply, and demand is picking up. So I believe the results will be better than anticipated. डॉक्टर शर्मा, यदि हम जो एफपीआईज हैं उनके रुझान को देखें तो मार्च, अप्रैल और मई में हमने देखा कि बाजार से उन्होंने पैसे निकाले और बड़ी संख्या में निकाले। मार्च में सबसे अधिक लाख करोड़ से ऊपर क्रमिक रूप से ये घटता चला गया, और जून में कह ले कि अच्छा खासा निवेश उन्होंने भारतीय पूंजी बाजार में किया। जुलाई के शुरुआती 3 दिन में थोड़ी से पूंजी निकासी की प्रवृत्ति देखी, लेकिन उसके बाद फिर निवेश का सिलसिला शुरू हुआ। एफपीआईज का रुझान क्या कह रहा है भारतीय शेयर बाजार को, पूंजी बाजार को देखकर? देखिए, इस समय पे जो ग्लोबल लिक्विडिटी है वो बहुत अच्छी है, और जब लिक्विडिटी अच्छी होती है तो लिक्विडिटी को क्या चाहिए? ग्रोथ चाहिए। लिक्विडिटी इज ऑलवेज इन द सर्च ऑफ ग्रोथ पार्टनर्स, और भारत उनमें एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देश है जहां पे उनको ग्रोथ दिखाई दे रही है। क्योंकि ये जरूर है कि वो भी ग्लोबल इन्वेस्टर भी समझता है कि कोविड की वजह से जो ग्रोथ है वो इम्पैक्ट हुई है, या कोविड की वजह से जो स्लो डाउन है या सेक्टर्स इम्पैक्टेड है, लेकिन कोविड के खत्म होते ही जो ग्रोथ है वो शार्पली पिकअप करेगी। तो इसीलिए जो निवेशक हैं, जिनके जो लिक्विडिटी ड्रिवन जो निवेशक हैं, वो ज्यादातर भारत की तरफ देख रहे हैं और भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और भारत की मार्केट के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और मार्केट इस लेवल पे जैसे ही कोविड सबसाइड होगा आने वाले टाइम में, तो मार्केट शार्पली जंप कर सकती है। और मैं तो ये समझता हूँ कि अगर जिस तरीके से ग्लोबल लिक्विडिटी है और भारत में जो रिफॉर्म्स हुई हैं, रेक सेगमेंट के लिए रिफॉर्म हुई है, तो मार्केट आने वाले टाइम में एक न्यू हाई बनाने की चेष्टा भी रख सकती है। What's your take on the coming days? How is the market going to perform? Your views. Volatility and correction cannot be ruled out, but in the medium to long term, markets will remain intact and markets will perform better as compared with the earlier period. Okay. Because last year also the growth was not that much intact. We only grew at the rate of 4.2%, but there were a lot of reforms. So because we're going to get the result of all those reforms will IIP numbers also, Dr. Sharma, tomorrow. Sorry? So we will be getting IIP numbers also tomorrow. Yes. I don't see any gung-ho in the IIP numbers, but there will be numbers will be better than the previous month. But in the coming times, there is expectation that numbers will improve significantly. आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर, जहां कुल मिलाकर आज तेजी दिखी है। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.4% लाभ के साथ बंद हुआ। हांगकांग का हेंग सेंग 0.3% ऊपर आकर बंद हुआ।
जापान का निक्केई 225 और दक्षिण कोरिया का कोस्पी दोनों सूचकांक 0.4% फायदे में रहे। उधर बिकवाली के दबाव में सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.3% नीचे आ गया। यूरोपीय बाजारों की ओर ध्यान दें तो समाचार तैयार किए जाने तक मिला जुला रुख बना हुआ था। अंतर्दिवसीय कारोबार में एक ओर जहां जर्मनी का डेक्स 1.2% ऊपर चल रहा था, वहीं लंदन का FTSE 100 0.6% नीचे कारोबार कर रहा था। लेकिन फ्रांस का कैक 40 बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर पर बना हुआ था। In the US, the technology shares boosted Wall Street's main indices yesterday as early signs of an economic rebound dominated over fears of another lockdown due to a jump in coronavirus cases across the country. Safe haven gold rose more than 1% as the number of confirmed US cases surpassed 3 million, affecting nearly 1 of every 100 Americans. The Dow Jones gained 0.7%, the S&P 500 climbed 0.8%, and the Nasdaq Composite zoomed 1.4%. वैश्विक अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाती दिख रही, खासतौर से यूरोप की? देखिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था में ग्रोथ डिसेलरेट करेगी। पहले तो -3% के आसपास का अनुमान था कि डिसेलरेट करेगी, लेकिन अभी जो रिसेंट स्टैटिस्टिक्स है उसके अनुसार 5% के आसपास डिसेलरेट कर सकती है, माइनस में जा सकती है, जो कि लगभग कोई मैं समझता हूं कि अगर $88 ट्रिलियन का जीडीपी है तो $6-7 ट्रिलियन का एक सेटबैक होगा पूरी अर्थव्यवस्था को। लेकिन उसमें जो ज्यादातर ग्रोथ डिक्लाइन करेगी वो यूरोप और अमेरिका में होगा। जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं लाइक इंडिया, यहाँ पे जो डिसेलरेशन है वो बहुत कम रहेगी। और खासकर जो जैसे इंडिया का सिनेरियो है, इंडिया में तो मैं समझता हूं कि ये जरूर है कि ग्रोथ डिसेलरेट करेगी, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस है उनसे बेटर मेरे ख्याल से परफॉर्म करेगा इंडिया, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो ग्रीन शूट्स आ रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि पूरा ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर कोविड का काफी खराब असर रहेगा। आइए ध्यान दें रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज $1 की तुलना में रुपया 3 पैसे मजबूत हुआ, 74 रुपए 99 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। And moving on, the oil prices traded almost flat as concerns about renewed COVID-19 lockdown in the United States outweighed signs of a recovery in the U.S. gasoline demand. In intraday trade, Brent crude prices were trading at $43.50 per barrel, while WTI crude prices were at $40.90 per barrel. आइए चलें सर्राफा बाजार। दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की चमक तेज रही। सोने का मूल्य 232 रुपए बढ़कर 50,184 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी 1,275 रुपए उछलकर 52,930 रुपए प्रति किलो हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने का मूल्य मजबूत हुआ, $1,813 प्रति आउंस हो गया। चांदी $18.94 प्रति आउंस के स्तर पर पहुंच गई। डॉक्टर शर्मा, आप लंबे समय से सोने के बारे में अनुमान लगाते रहे हैं कि यह इसके दाम बढ़ेंगे। अब सोना कहां जाता दिख रहा? 50,000 तो भी पहुंच गया, और अब इसमें कितने उछाल के आसार आपको दिख रहे हैं? जी जी बिल्कुल, मैं आपने सही फरमाया। मैं जब सोना 33-34 हजार था तब से मैं काफी मेरा अनुमान था कि ये 50,000 तक जा सकता है। वो चीज सिद्ध हो गई है। आने वाले टाइम में भी इसके प्राइसेस इंटैक्ट रहेंगे, वॉलेटाइल जरूर रहेगा। हो सकता है करेक्शन आए तो वापस ये 43, 44, 45 हजार पे आ जाए, लेकिन प्राइसेस इंटैक्ट रहेंगे। जो गोल्ड है वो अपनी चमक बनाए रखेगा। यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे, आम कह लें कि जो सोने में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए सोने में निवेश करना अभी वर्तमान स्तर पर कैसा रहेगा? वर्तमान स्तर पे मैं तो नहीं सलाह दूंगा कि अभी उनको गोल्ड में एंटर करना चाहिए, क्योंकि यहीं पर कमोडिटी प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल रह सकते हैं। बस यही हम आपको डॉक्टर शर्मा है एडवांस्ड इकोनॉमीज का, तो श्रोताओं की ओर से धन्यवाद देना चाहेंगे आपको डॉक्टर शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये जरूर है कि जो लोग अपना लंबे Dr. Sharma, I'm afraid we wouldn't be able to carry any further. We would like to tell you about the headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is playing a leading role in global revival, endorses contribution of Indian talent in revival of COVID-19 hit global economy. Key domestic stocks rise more than 1%, resuming rally after a day's breather. Global equity indices log gains amid hope of upcoming
company earnings, and gold crosses rupees 50,000 mark per 10 grams in Delhi's bullion market. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra. Market Mantra.